मिशेल de Montaigne एक फ्रेंच रेनेसांस मिडिल क्लास लॉयर और सिविल सर्वेंट था हु रिटायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ एट द एज ऑफ 38, जिसके बाद उसने अपने आप को लॉक कर लिया इन नियर टोटल रिक्लूजन इन द सदर्न टावर ऑफ द शेट्यू de Montaigne, और वहाँ पे उसने कॉन्टम्पलेट किया ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स और वहाँ पे उसने अपने एसेज लिखे। मोंटेनिया ने अपनी ज़िंदगी में ह्यूगेनोट वॉर्स को देखा और ही वॉज अ विटनेस टू द हीनियस क्राइम्स एंड कार्नेज ऑफ दीज वॉर्स, और वो काफ़ी स्केप्टिकल हो गया ऑफ द मोटिव्स ऑफ रिलीजन, पॉलिटिक्स और हर तरह के सोसाइटल रेगुलेशन को लेके, एंड ही प्रेफर्ड टू पुट हिज ट्रस्ट इन रीज़न अलोन। उसकी राइटिंग्स जो इनफॉर्मल पर्सनल कॉम्पोजिशंस हैं जो काफ़ी वेरियस सब्जेक्ट्स पे रिफ्लेक्ट करती हैं, सच एज एजुकेशन, स्मेल्स, प्रेयर्स, ह्यूमन माइंड, पर्सनैलिटी, कैनिबल्स इवन, वो उसके लिए एक मीन्स बन गए फॉर एग्जामिनिंग हिज ओन कॉन्शियंस। और यहाँ पे आपको डेकार्ट की राइटिंग्स की भी झलक नज़र आती है व्हेन ही प्रेजेंट्स हिज ओन मोटो एज व्हाट डू आई नो। ये जो कलेक्शन है एसेस की ऑन सॉलिट्यूड, इसका एक बड़ा लूज स्ट्रक्चर है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एसेज लाइक आई जस्ट सेड, और इनमें पहला एसे जो है इट इज़ बाय द नेम ऑन सॉलिट्यूड। इस कलेक्शन में काफ़ी डिफरेंट एसेज हैं सच एज ऑन टॉपिक्स लाइक books, anger, fear, sleep, and although they contain much of philosophy, they themselves are not a philosophical treatise. Montaigne attempt नहीं कर रहा कि वो एक फॉर्मल आर्ग्यूमेंट पेश कर रहा है या एक फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट पेश कर रहा है, वो सिंपली लिख रहा है एंड ही इज सिंपली फिगरिंग आउट व्हाट ही थिंक्स एज ही गोज अलॉन्ग, एज ही राइट्स अलॉन्ग। मिशेल de Montaigne ये आर्ग्यू कर रहा है कि सिर्फ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर पॉसिबल है कि हम कंट्रोल हासिल कर सकते हैं वापस अपनी लाइफ के ऊपर, अपने ऊपर, बाय डिज़ोल्विंग अटैचमेंट्स एंड बाय रीडिस्कवरिंग पीस। अगर आप इन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस में से किसी को भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दोगे, लाइवलीहुड की स्ट्रगल, कैरियर की स्ट्रगल, स्पाउस की स्ट्रगल, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वर्ल्डली अटैचमेंट्स जिनसे मिशेल de Montaigne is saying you have to dissolve these attachments. Otherwise, the cycle of pain and suffering will persist until we have repossessed our own souls. फिर वो रिकन्सिडर करता है अपने ही स्टेटमेंट को कि सिर्फ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर ही इट इज़ पॉसिबल टू टेक स्टॉक ऑफ आवर लाइव्स। वो कहता है कि इस तरह की ज़िंदगी, दिस रिनंसिएट लाइफ, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर द एवरेज मैन। मिशेल de Montaigne खुद तो ही वॉज वेरी वेल ऑफ एंड ही हैड द इकनॉमिक मीन्स कि वो सोसाइटी से सेपरेटली रह सके, लेकिन नॉट ऑल पीपल हैव दैट। So he instead proposed a second definition, कि even when among the many, even when among the crowd, even when among the society, you should live in such a way कि you should reside in the world but yet not be of it. You should not cling to it. He says, wives, children and goods must be had, and especially health, by him that can get it. But we are not so to set our hearts upon them that our happiness must have its dependence upon them. We must reserve a back shop, wholly our own and entirely free, wherein to settle our true liberty, our principal solitude and retreat. फिर वो बात करता है कि काफ़ी लोग they have this fear of a descent into solitude या loneliness या फिर silence because they fear silence most of all. उनको किसी तरह की कॉन्वर्सेशन, किसी तरह का ह्यूमन इंटरेक्शन ज़रूरी होता है, एंड दिस इज़ प्रिसाइजली द हैबिट जो वो कह रहा है हमें ब्रेक करनी पड़ेगी। क्योंकि इन सम केसेस ही सेज बड़ा आसान है कि आप अपने आप से कंसील्ड रहो, अपने आप से वेल्ड रहो, क्योंकि आप इतना डीपली एक पार्ट बन चुके हो सोसाइटी और कम्युनिटी का और इवन टू सम एक्सटेंट द क्राउड का, द हर्ड का, कि यू हैवंट बीन एबल टू फाइंड योर सेल्फ। और इस सिचुएशन में एक ही चीज़ पॉसिबल है कि आप या तो नहीं करोगे अपने आप को फाइंड, या फिर आप सिक्लूजन में, रिट्रीट में जाके अपने आप को तलाश करोगे आफ्टर एम्ब्रेसिंग सॉलिट्यूड एंड साइलेंस। वो कहता है, वी मस्ट ब्रेक द नॉट ऑफ आवर ऑब्लिगेशंस हाउ स्ट्रॉन्ग सो एवर, एंड हेयर आफ्टर लव दिस और दैट बट espouse nothing but ourselves. That is to say, let the remainder be our own but not so joined and so close as not to be forced away without flaying us or tearing out part of our whole. The greatest thing in the world is for a man to know that he is his own. It is time to wean ourselves from society when we can no longer add anything to it. He who is not in a condition to lend must forbid himself to borrow. He says,
our forces begin to fail us, let us call them in and concentrate them in and for ourselves. He that can cast off within himself and resolve the offices of friendship and company, let him do it. And this decay of nature which renders him useless, burdensome, and importunate to others, let him take care not to be useless, burdensome, and importunate to himself. Let him soothe and caress himself, and above all things, be sure to govern himself with reverence to his reason and conscience to that degree as to be ashamed to make a false step in their presence. He also says, you have devoted your life to the light. Devote what remains to obscurity. It is impossible to give up your pursuits if you do not give up their fruits. Renounce all concern for name and glory. There is the risk that the radiance of your former deeds may still cast too much light upon you and pursue you right into your lair. Among other gratifications, give up the one which comes from other people's approval. As for your learned intelligence, do not worry about that. It will not lose its effect if you yourself are improved by it. Remember the man who was asked why he toiled so hard at an art which few could ever know about. For me, a few are enough, one is enough, having none is enough. He spoke the truth. You and one companion are audience enough for each other, so are you for yourself. For you, let the crowd be one, and one be a crowd. It is a wild ambition in one's retreat to want to extract glory from one's idleness. We must do like the beasts and scuff out our tracks at the entrance to our lairs. You should no longer be concerned with what the world says of you, but with what you say to yourself. Withdraw into yourself, but first prepare yourself to welcome yourself there. It would be madness to entrust yourself to yourself if you did not know how to govern yourself. As I mentioned in the start, Montaigne ये कर रहा है कि वो लिखते हुए साथ साथ सोच भी रहा है. He's thinking about what he thinks about things. और वो जो उसकी मेटाकॉग्निशन का प्रोसेस है पूरा, वो हमें इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स या एसेज मिलता है इस किताब में, एंड अलॉन्ग विद मैनी अदर ऑफ हिज एसेज एंड द कलेक्शन ऑफ हिज एसेज. तो वो नेसेसरीली ज़रूरी नहीं है कि मोंटेनिया हर ऐसे के एंड पे समराइज़ करे या इन्फॉर्मेशन को टाई अप करे. When he is out of thoughts and examples on the subject, he simply ends.